हमारे सब में पढ़ेगा। जियोपॉलिटिक्स मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिकल मैनर में किसी इंडिविजुअल की कन्वेंशनल सिक्योरिटी मतलब कन्वेंशनल मतलब रेगुलर सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट हो रही है। तो मैं आई वाज टू द पार्ट कि लाइक यू नो जॉब लॉसेस जितने हो रहे हैं उतने गेन्स भी तो हो ही रहे हैं एआई डेवलपमेंट की वजह से। जितने जॉब अपॉर्चुनिटीज बने से मैं तेरे को भी समझूं। हाँ ओके। Every AI that is made, it requires, you know, a minimum of a full functioning team. एक टीम मिनिमम लगती है उसको लाइक रेगुलर बग फिक्सेस, फ्रेमवर्क, अपडेट सब करने के लिए। See, understood? You always need an individual to rectify AI's mistakes. हमने को एमबीए की समझा है। मेरे ये बंदे से नहीं होगा, है ना? एकदम ऐसा। जैसे वो आर्य पाटिल, मराठी नाम। आर्य वो चाहिए आर्य पाटिल। गोरा सा गोल मटोल सा मेरी हाइट जितना देखा प्राइवेट की पोस्ट है वो भी मैंने नहीं देखी आज तक मैंने कभी कितने लोगों से प्यार मैं एट में मेरा ड्यू हुआ था। अब तो मेरा ब्यूरॉन हो गया। जब बीच में मैं हॉट थी ना तब क्या किया है मेरा बड़ी अभी का बोल रही हूँ ये तो आगे पढ़ने की आदत है। नहीं आया पर नहीं इसका गाने का ऐसे टॉकिंग स्टेज बहुत पुरानी बात है ये। तो हम लोग अगर बात किसी को ये भी मिले वो एप्लाई में जो भी होगा वही था वही आ रहा है। वो कब बात कर रहे हैं आज तो आज ये आज हुआ था सही बहुत टाइम हो गया। अच्छा थैंक गॉड। है ना better than that. I will. आज कोई आया नहीं ना तो अभी आएंगे उन लोग शायद बारिश की वजह से नहीं लोग राइट। क्या होमवर्क का 5 बार लिखना है अरे लाइक फॉर्मूला होमवर्क वाज गिवन ना। I don't think so. You already discussed. Okay. You know, atoms and molecules, right? No? We have done atomic mass, if you remember. What is atomic mass? Atomic mass is nothing but what? It is a ratio. It is a ratio of what? It's the average mass of an atom. To 1/12 mass of one atom of carbon 12. It tells us how many times one atom of an element is heavier. Okay? Now why do we consider average mass? You get it? Average mass because atoms exist in the form of what? Isotopes. That's why we consider average mass. So if somebody says that hydrogen ka mass kitna hai? It is 1 unified mass. Okay, carbon is how much? 12. Oxygen is how much? Nitrogen kitna hai? 14. And what is one unified mass?
okay, is nothing but what? 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. Oxygen is equal to 16. Sodium is equal to what? 23. Right? Okay. Then calcium is equal to 40. Sulfur 32. ऐसा करके अलग-अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक मास. ठीक है? इसको अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है तो क्या हो जाएगा? आंसर will be 1 into 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. Carbon cost at 12 times हो जाएगा. 12 times 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. So that is the way we can have a multiple kind of way. But then you will say, sir, what about chlorine? Chlorine is having 35.5. Now, ये mass fractional क्यों है? It is because this particular element exists in the form of what? Isotopes. Now, what are isotopes? Isotopes are atoms of the same element having same atomic number. जैसे for example अगर chlorine का देखोगे, chlorine exists in the form of what? Atomic mass number 35 and 37. There are two kinds of isotopes for fluorine. Atomic number नीचे लिखना है, mass number ऊपर लिखना है, ठीक है ना? अब यहाँ पे इसका abundance nature में कितना है? 75%. We find it in nature 75. Come, 75%. ठीक है? और इसका कितना है? 25%. Right? अभी इसको देखो कैसे एवरेज फाइंड आउट करेंगे. तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा? 50 का. How will you find out average atomic mass of any element? इसमें क्या करना है? You take the atomic mass of the first isotope multiplied by, okay? इधर देखो, by उसका abundance, percentage abundance. Abundance का मतलब क्या है? नेचर में उसको कितना परसेंटेज पाया जाएगा? नेचर में 75% उसका एग्जिस्टेंस है. ओके, तो ये फर्स्ट आइसोटोप है प्लस एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप. ओके, एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज abundance. Abundance of what? In the nature. ठीक है? Of the second isotope. If efficiency is given in percentage, तो हम लोग क्या करेंगे? Divide by 100. Yes or no? इसको देखो यहाँ पे. अनुराग, ये क्या है? Atomic mass of the first isotope कितना है? 35. Yes or no? इसका abundance कितना है? 75. Right? Plus abundance, sorry, atomic mass of the second isotope how much? 37. Into what? Abundance कितना है? 25. ठीक है? Upon what? 100. isotopes होता है. हाँ? isotopes होता है. Isotopes नहीं समझो. तुमने isotopes बताया था तुम्हारे को ना? What are isotopes? ये देखो, ये for example nature में ना, like chlorine का दो isotope रहते हैं. Isotope means जिसका जो element is same, but their mass numbers are different. Mass numbers are different, but their atomic numbers are same. जैसा देखो, ये दो chlorine same element belong to the same element, but their mass numbers are different. Atomic number is same. So such type of elements are called as what? Come, Edlin. ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है? मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप. वैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, राइट? व्हिच आर दोस आइसोटोप्स? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स. अगर टू और मोर एलिमेंट्स का नंबर डिफरेंट है तो वो तो आइसोबार्स हो जाएगा. आइसोबार. अगर सपोज दो एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर सेम है, but atomic number has to be different because no two elements are having same atomic number. ठीक है? जैसे तुम फ्रूट मार्केट में जाते हो, ओके, और मम्मी ने तुमको क्या बोला? गेट सम ग्रीन एप्पल्स. मम्मी, green apples available in the market? I mean, I have only eaten red apples, right? But आज मम्मी ने तुमको green apples के लिए भेजा है.
तुम मार्केट में ढूंढते हो तो मिलता है कि नहीं तुमको? मिलता है कि नहीं? शायद नहीं। नहीं मिलता है। ग्रीन एप्पल है कि नहीं? है। हाँ, तो फिर एप्पल का दो वैरायटी है, ये ना फॉर एग्जांपल जब एक एलिमेंट का दो वैरायटी हो So सकती can you please turn off the fan? हाँ, व्हाई नॉट? क्यों नहीं? किधर है फैन? यहाँ पे। अच्छा सुनो, तो दो एप्पल, दो टाइप का वैरायटी मिल रहा है, यस और नो? तो हम लोग वॉशिंगटन एप्पल एंड ग्रीन एप्पल, या कश्मीरी एप्पल एंड ग्रीन, तो ऐसा करके एलिमेंट्स आल्सो exist in two or more different with a different mass numbers. इसको ऐसा सोचो कि तुमको फॉर एग्जांपल तुमने 100 टेस्ट दिया 8 स्टैंडर्ड में, उसमें से 75 टेस्ट में तुमको 35 मार्क्स मिला आउट ऑफ 40, और 25 टाइम्स यू हैव गॉट व्हाट 37 मार्क्स। तो अगर टीचर टेक्स दिस मार्क्स 35, तो क्या हो जाएगा? योर रैंक विल कम डाउन। व्हाई? सर टीचर यू टेकन 35 मार्क्स बट some tests have got 37 also. If teacher takes this marks, he injustice to other students. Why? Because their ranks are going down. Your rank is up, moving up. So what teacher does? Average. Average ले ली उसने। आपको 75 टेस्ट में 35 मार्क्स मिला out of 100 टेस्ट, और 25% में पर 100%, मैथ्स के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, परसेंट का मतलब है पर 100, तो उसको हमेशा 100 से डिवाइड कर देगा, या फिर अपन डिपेंड करता है कि अगर ये ना वाला 100 नहीं ले रहे तो परसेंटेज कैलकुलेट करना था मल्टीप्लाई बाय 100, रिमेंबर, बिकॉज़ वहां पे परसेंटेज है, ठीक है? अच्छा सुनो, 25 टाइम्स आपको 37 मार्क्स मिला आउट ऑफ 100 टेस्ट, तो टीचर क्या बोलेंगे? व्हाट इज द एवरेज मार्क्स? तुम्हारा एवरेज है 34 और 37 के बीच में आ जाएगा। कैसे? 75, अभी देखो ये क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? This is a common denominator, right? What is this? 35 into 75 upon 100 plus ये प्लस साइन बीच में रख लो, और ये क्या हो जाएगा? upon 100। क्यों? अब 75 3 sorry 25 3s are 25 4s are, क्यों? ये कितना है? 25 4s are, am I right or not? अब देखो एलसीएम डायरेक्टली 4 पे आ गया, 35 to 3 107, क्यों? 37 into 1 30, कितना हो गया? 142 divided by 4, how much is it? 35.5। तो your marks teacher will give you how much? Average 35, because 75% आपको तो 35 मार्क्स मिला, तो आपका आंसर क्लोज टू 35 मींस आपका एवरेज थोड़ा सा 35 के ऊपर आएगा। 35.5 is the average atomic mass of chlorine. So जिसका isotopes है, sometimes it comes exactly as whole number, but sometimes it may not come. ठीक है कि नहीं? That's why most of the time elements are having whole number masses, but sometimes you have fractional mass because of the presence of what? Isotopes. ठीक है? इसीलिए कभी-कभी fractional mass है। ठीक है? तो ये हम लोगों ने last time नहीं किया था, so I just extended it. Okay, please copy down so that we can move to the molecular mass. Molecular mass क्या है वो देखते हैं. Today we'll complete this topic. फिर question and answers पे जाते हैं. ठीक है ना? ये last topic बचेगा बस. Then after that you are free. इस Monday का lecture तुम थोड़ा late आ सकते हो. इन्हें इसके बाद और 2-3 lecture होगा. Structure of atom खत्म. Edlin, you will be free. You can sleep for some more time. Isn't it at home? Or you can enjoy your food for, for example, you can chew your food 108 times. Or we'll just have a different class in chemistry on that day. Oh, Chemistry, other teachers will be busy in other branch, na? So all the teachers will be occupied. So I don't think so you'll have any other lecture other than SAP or MVPS, depending upon your doubt solving or something. हम लोग 3-4 लेक्चर ये अगस्त मंथ 15 अगस्त को तुमको क्या मिलेगा? 15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त क्या है? इंडिपेंडेंस। उस दिन इंडिपेंडेंस मिल जाएगा स्टडीज केमिस्ट्री, ठीक है ना? उसके बाद सिर्फ तुमको घर में बैठ के पढ़ना है और आराम से तुम रिलैक्स करके आ सकते हो। 5:15 का अबंडेंस के नीचे क्या है?
किधर abundance of first isotope, यहाँ पे abundance of second, ये देखो दो isotope है ना, इसलिए सर कौन एब्सेंट हो गया? Sanjiti is present, right? Anurag present, Ritika present. Yes. Then Aditi, Akshara किधर है? Akshara doesn't come on Monday lecture, she has dance classes. Dance class. She hasn't been showing up for a long time though. Oh, Jityasha has come. Manaswi, yes. MJ, तुमने MJ लिखा. माइकल जैक्सन का कोड वर्ड जो था ना, माइकल जैक्सन का MJ. विश्वजा, सिद्धि, वो भी एब्सेंट हो गए. किसका SRK नहीं है ना? चलो ठीक है. नहीं तो SRK means what, Adeline? शाहरुख खान. अरे और किंग खान we can say. चलो हो गया सबका? Anurag, who's your favorite actor? Favorite actor? अरे sorry, actress. Actor? तुमको actress पसंद है कि actor? Andrew Garfield. अच्छा. Best Spider-Man. No, Tom Holland. No. Andrew was the superior Spider-Man. Spider-Man क्या? Sir, तो तुम स्पाइडरमैन का पूरा अपना देख रहे हो सीरीज ना? स्पाइडरमैन का सीरीज देख रहे हो तुम? और इसका क्या बोलते हैं, बैटमैन Batman के लिए. देखा तुमने? और वो उसका नहीं देखा तुमने? जेम्स बॉन्ड, टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल. टॉम क्रूज तो सबसे फेमस पॉपुलर है ना? चलो नहीं. और मनस्वी आपका क्या है? MJ. कोई भी एक्ट्रेस ये नहीं है, एक्टर? हाँ, फेवरेट नहीं, कोई भी नहीं. बॉलीवुड है, हॉलीवुड, टॉलीवुड नहीं? It should be Zendaya because she plays MJ. हाँ, okay. She doesn't see films, she only studies. Very good. हो गया? Okay. नहीं, लिखो आराम से. Ritika, what happened? आज तुम टायर्ड लग रही हो, क्या बात है? She is the speaker of the school. That's अच्छा, speaker. she's so. So while coming also you have to shout, isn't it? Early morning also. They make me write registers for some reason. Which register? It's council register. I'm exhausted. All day I was writing registers. Full day today. I was running all from the first teachers. floor to fifth floor trying to get this teacher's signature, that teacher's Oh, signature. Till the prayer started, I was going up and down. without Like this lift. person Did you prayer. really get to study? Without lift, na? Yeah, we are not Or you allowed walk. to We're use not allowed to use the lift. अच्छा है. Huh? You are not supposed to. नहीं, CR can go. Na? We're supposed to. The prefect can use, na? No. नहीं. No. Say Head boy and head girl they can use. no. No. No, None of us. Only faculty. only faculty. Most schools, I guess. Even faculty is discouraged from using it. Why do you have lifts then? Why do you have lifts? They're just discouraged. Nobody's asking. Just for fitness. Not just because they have to pay less for the lift. हाँ. Makes sense.
Okay. So what is molecular mass now? Definitely, if atomic mass is mass of a molecule of an atom, then molecular mass क्या हो जाएगा? Mass of a molecule. ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा? How will you calculate? और what is the meaning of molecular mass? तो देखो यहाँ पे change करते हैं. Molecular mass is basically, okay, average mass of what? Of a molecule to 1/12 mass of one atom of carbon. That is, we compare always with an atom. Okay. Now to find out the molecular mass, उसके लिए क्या करना है? आपको sum total of the atomic mass लेना है. जैसे if somebody says, sir, how will you calculate the molecular mass of carbon dioxide? ठीक है? Now, how will you calculate molecular mass of carbon dioxide? What you can do first, you write the formula of carbon dioxide, right? Now, what is the atomic mass of carbon? 12. You know, it consists of one carbon atom and 2 oxygen. Yes or no? So 2 oxygen अलग-अलग लिख दो. Now, what is the atomic mass of carbon? 12. Oxygen कितना है? 16 plus 16. You will say, sir, instead of writing this, can we write this way? 2 into oxygen? Yes, this way also. So what do you do? 2 into 16. How much is it? 12 plus 32. How much is it? 44. Uniform. This is the mass of one molecule of carbon dioxide. So what is molecular mass? Is sum total of the atomic masses of various atoms present in the molecule. So it is nothing but 44 unified mass. That means carbon dioxide, one molecule of carbon dioxide is 44 times heavier than 1/12 mass of one atom of carbon. Or it is 44 times heavier than mass of one atom of hydrogen. इन आपको एक साइड क्या करना पड़ेगा? 44 हाइड्रोजन एटम्स रखना पड़ेगा और दूसरे साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड. Then you consider they are balanced. Likewise, if somebody wants to know, for example, water का molecular mass क्या हो जाएगा? Now there are 2 hydrogen atoms, okay, and 1 oxygen atom. So hydrogen का atomic mass कितना है? 1. Oxygen का atomic mass कितना है? 16. तो कितना हो जाएगा? 2 plus 16, how much is it? 18. That means it is 18 times heavier than mass of one atom of carbon. 1/12 mass of one atom of carbon or one atom of hydrogen. Means अगर आपको ये एक molecule of carbon dioxide, water को balance करना है, on the other side, how many hydrogen atoms you to place? 18. That is the way the balancing will take place. Okay. So this way we can find out, okay, the molecular mass. So let me give you some examples and you tell me what is the molecular mass of this compound. Okay. So first is, already we have done this. For example, here we go. So for example, let us say sulfuric acid. Calculate the molecular mass of the following. Molecular mass of the following. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. Molecular mass of H2SO4. ठीक है? Then let us say nitric acid. Then let us say, for example, HCl. Suppose ये question है या NaOH ले लो. How will you do it? Now see, above this you will get the atomic mass of various elements. Sulfur 32, oxygen 16, ठीक है? Nitrogen 14. Then what is it? For example, chlorine 35.5 already mentioned earlier. Then what about sodium? Sodium 23. ठीक है? अब इसको देखो कैसे करना है. Now you will take the sum total of the atomic mass. What will you get? 2 hydrogen into what? 1 plus sulfur 32 plus oxygen 16, 4 is 64. What about this? 1 nitrogen atom plus nitrogen 14, oxygen 3 है, 3 into 16. You will find the final answer. Then 1 is 1 hydrogen. How many chlorine? 1 chlorine 35.5. Sodium कितना है? 23 plus this is 16 plus 1. Tell me all the answers you calculate and tell me the answer. ठीक है? चलो one by one each one will try to view. मृतिका क्या आंसर है इसका फर्स्ट का? हाँ सॉल्व करके सब लोग बताएंगे. ये इसी चल रहा है कि बंद है? सर बहुत ठंड है. बहुत ठंड लग रही है. हाँ इसीलिए बंद कर दिया.
Very good. 98. And then I just got the answer. You're really mean for saying that. Sorry. Next one. Headline क्या आंसर लग रहा है आपको? जितना शेयर क्या लग रहा है आपको आंसर? अदिति Rate and calculate. बुक में कैलकुलेट करके I देखिए. got the answer. But if I want Wait, no, you're not saying anything. That's why I'm asking if you want to say. So it will be 14 plus 48 plus 1. 62 Huh? plus 1. 62 plus 1, 63. Yes, very good. This is oral 36.5. ये क्या है 40. Simple. ठीक है? तो ऐसा करके आपको molecular mass calculate करना है. And what it tells us that one molecule of sulfuric acid is 98 times heavier than mass of one atom of hydrogen. ठीक है? यानी ये 98 times heavier है. ठीक है? So like for example, What you are getting after every number? unified mass. One unified mass is 1 point. यानी इसको ग्राम्स में आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं. This one. Because every time it will be very much inconvenient. यानी इसको ये लिखेंगे तो सब लोगों को क्या लगेगा? तो हम लोग क्या करते हैं? This amount has been written as U, 1 U. ठीक है? Okay. So now, but last concept, and that is moles. What is moles basically? ठीक है? ध्यान दो. Mole is what? Basic unit of what? Mass in chemistry. ये हो गया सबका? Okay. Now let's come to the final part of this topic. Mole. What is mole basically? Mole means, like for example, mole is actually what? A collection of. It's a collection of 6.022 into 10 raised to 23 particles. Means the moment you say, for example, sir, I've got, for example, 1 mole of carbon atoms, means you are having 1 mole of carbon, means it is a collection of 6.022 into 10 raised to 23 carbon atoms. ठीक है? ध्यान से देखो. इसका मतलब है, suppose for example, 1 mole is a basic unit of what? Quantity in chemistry. Quantity is actually what expressed in what? In terms of mass. तो mass का उसको रूप दे सकते हो, उसको number का रूप दे सकते हो. Number तो already लिखा है. And उसको, for example, volume का रूप दे सकते हो. Volume is what? More quantity, more volume. More number. Sir, my school is very big. Why? We are having 5,000 students in our school. So our number is big. ठीक है? The quantity जाएगा. Likewise, sir, our campus is huge. It is right from Nerul to CBD. Why? Because more number of students have to be accommodated. So quantity. Likewise, mass. And due to this more number of students, the mass of those students on that particular area or that particular place where the school is situated is also more. More number of students are moving up, having a movement over there. So mass is basically, यहाँ पे दो particles है. One is actually what? Atom. Okay, so whenever you consider the atomic mass in grams, which is called as gram atomic mass, okay, yeah, gram mole of atoms, we can say gram atomic mass is nothing but abbreviated as what? GAM or gram molecular mass. यानी जब भी तुम molecular mass को grams में express करोगे, तो it is nothing but what? 1 mole of a substance. Okay, तो पहले number ले लेते हैं, which is GAM. Now number का मतलब क्या है? Suppose, let us say, a child's mother is sending this particular child to the fruit market. ठीक है? यहाँ पे fruit market है. ठीक है? और this particular person is actually what? Selling some fruits. Let us say, for example, oranges. ठीक है? अब ये जाके है ना, he says, uncle, I want, for example, 12 oranges. Right? This fruit vendor smiles while looking at the face of this child. Why he smiles? Because this fruit vendor comes to know that yes, he is coming for the first time. Right? Because he could have told in a convenient manner that 12 oranges is equal to 1. Means he could have mentioned as 12, 1 dozen. 1 dozen is a collection of what? 12 units.
Likewise, 1 mole is a collection of what? 6.022 into 10 raised to why not? Where is the switch? Switch इधर ही है कि बाहर है? No. हाँ? We can stand up. Stand and off it. Thank you. बस. ठीक है? So 1 dozen is nothing but what? A collection of 12 oranges. So but you say, sir, uncle, I want 12 dozen. 12 dozen का मतलब क्या है? I require, for example, 144 oranges. तो अगर 1 mole के बराबर 6.022 into 10 raised to 23 particles है, तो अगर suppose 10 moles होगा तो कितना होगा? 10 raised to 24 हो जाएगा, right ना? तो ये याद रखिए. तो ये याद रखना. 1 mole. Dozen. तो डजन का जैसे फ्रूट मार्केट में हम डजन में बात करेंगे, बट केमिकल मार्केट में यू टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल. सर, आई ड्रैंक 1 मोल ऑफ वाटर टुडे. तो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ वाटर अगर आपके माउथ में गया है, दैट मींस यू हैव ड्रैंक 18 grams, isn't it? अपना 18 ग्राम तो बोले सर 18 ग्राम कैसे? Why 18? Because 18 is the molecular mass. Sorry. 18 is the molecular mass expressed in what? Grams. That means you have drank how many water molecules? 6.022 into 10 raised to 23. Why? Because अगर 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है और ये भी 1 मोल के बराबर है, तो they are equal, yes or no? The mole, that is mass and number, that is grams. But you say, how do you recognize, how do you show that 18 grams corresponds to 6.022 into 10 raised to 23? ठीक है? Mass of one molecule of this particular water is 18 unified mass. ये देखो, 18 unified का mass का मतलब है mass of one water molecule. One water molecule, याद रखना. 1 H2O. But अगर कोई बोलेगा सर mass of 1 mole, ये देखो, ये ध्यान रखना है. 1 mole of water molecule. Mass of 1 mole of water is how much? Now just see this. 1 mole is how much? 6.022 into 10 raised to 23 ना. तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे into 6.022 into 10 raised to 23 into, remember ये यूनिफाइड मास है, तो 1.66 into 10 raised to minus 24, yes or no? तो ये जो ग्राम्स में आ गया आपका, ओके. अब 10 raised to minus 24 and 10 raised to 23 is how much? 10 raised to minus 1. ठीक है? 1.66 और 6 से मल्टीप्लाई करें, 16 6 are 96, बट ये 7 है, यानी 6 है. That means what? ये almost 10 के बराबर आ जाएगा. और इसके आगे 18 और ये ग्राम्स में दिया है, अपने को ये कैंसिल हो गया. आंसर इज व्हाट? 18 grams. Means mass of 1 mole of water molecule is 18 grams, which is equal to what? So many particles, 6.022 into 10 raised to 23. Remember, तो 18 जब भी इसका molecular mass को grams में express करो, means it is gram molecular mass. Likewise, atomic mass. Like you say, sir, I have got 1 mole of hydrogen atoms. 1 mole of hydrogen atoms is equal to what? 1 gram of hydrogen atoms. Okay, 1 gram of oxygen is how much? Sorry, 1 mole of oxygen is equal to how much? Okay, 16 grams. तो जब भी तो उसका atomic mass grams में express करेंगे, तो उसका is equal to 1 mole. Okay, वैसे 14 grams is nothing but what? Is nothing but 14 grams of nitrogen atom is nothing but what? 1 mole of nitrogen. Likewise, volume also, 1 mole of any gas is occupying 22.4 liters. It's a fixed at STP. What is STP? At 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure, because volume depends upon temperature and pressure. So अगर suppose temperature 1 atmosphere, sorry 273 Kelvin है और pressure 1 atmosphere है, तो volume क्या हो जाएगा? Fix हो जाएगा. That means what? If you are having 22.4 liters of, let us say, gas like oxygen, it corresponds to 1 mole. But 1 mole, ये 22.4 liters में कितने molecules होंगे? 6.022 into 10 raised to 23. Such a big number. Okay, so this is nothing but a category. इसका हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर तुम इमेजिन करो कि ये जो है एक ब्रह्मास्त्र इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. व्हाट इज दिस ब्रह्मास्त्र इक्वेशन? कोई भी प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है. 1 mole of any substance is a collection of 6.022 into 10 raised to 23 particles. It can be atoms, it can be molecules, it can be ions, it can be electrons, protons, neutrons, whatever, is equal to
एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम्स के बारे में बात करें, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये और is equal to 22.4 liters at NTP or STP. STP means standard temperature and pressure. तो ये अगर इक्वेशन आपके पास है, तो दिस इज मोल टू नंबर रिलेशन, दिस इज मोल टू मास, एंड दिस इज व्हाट मोल टू वॉल्यूम. सो दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर मोल. ठीक है, तो मोल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी का तीन रूप है, मास, वॉल्यूम एंड नंबर. ठीक है ना, लिखो, इतना लिख लो, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स पे जाते हैं. स्कूल में टॉपिक हो गया है? नहीं, देखो आराम से लिखो, इसको एक नोट करके लिख लो. नोट. ये चाहिए क्या? फैन छोड़े हो? Yes. Ready 4 liters के बाद क्या? At 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. ऐसा होता है. At STP. STP means standard temperature and pressure, which is 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Standard temperature and pressure, which is 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Now let's take up some questions pertaining to this chapter, so that आपको awareness ज़्यादा है. ठीक है, चलो let us see. Any activities are there? One activity. चलो मदर्स पढ़िए, एक्टिविटी पढ़िए. Activity 3.1. पेज नंबर 54. 54 पेज नंबर. बोलिए. Activity 3.1 aim to prove the law of conservation of mass. Apparatus and chemical: cork, thread, conical flask, small ignition tube, copper sulfate and sodium carbonate. Procedure: prepare separately a 5% solution of copper sulfate and sodium carbonate. Take a little amount of solution of sodium carbonate in a conical flask and some solution of copper sulfate in an ignition tube. Hand the ignition tube in the flask carefully. See that the solutions do not get mixed. Form the flask. Weigh the flask with its contents carefully. Now tilt and swirl the flask so that the solutions, copper sulfate and sodium carbonate, get mixed. Weigh again. Observation: we observe that the weight is the same as the first weight. Conclusion: this proves the law of conservation of mass. Yes. So before the reaction and after the reaction, okay, the masses are same. So let us see the NCERT question first. Edlin, पढ़िए. First question. In a reaction, 5.3 grams of sodium carbonate It gets is really cold. Can we not turn on the fan? Cool. ACs are off. ACs off. Still cold. Can we not turn on the fan today? Okay. But it's very hot. I'm so sorry. It's not. Come in the front. Anurag. It's cold. Huh? Front is really. हाँ, चलो ठीक है. Okay. Come on, पढ़िए. In a reaction, 5.3 grams of sodium carbonate reacted with 6 grams of Ethanoic acid. ethanoic That is acid. acetic acid. हाँ. This
The products were 2.2 grams of carbon dioxide, 0.9 grams water, and 8.2 grams of sodium Sodium ethanoate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Yes. Sodium तो carbonate क्या हो जाएगा? हाँ. Plus ethanoic acid giving you sodium ethanoate plus ethanoate and then carbon dioxide carbon plus dioxide water. plus water. Now in the chemical formula form, Na2CO3 plus CH3COH giving you CO2 plus water plus sodium acetate. Now what do you do? Take the mass of the reactants, right? Mass of the reactants कितना है? 5.3 for sodium carbonate and 6 grams for acetic acid. What you will get? 11.3. But left hand side 11.3 है, right hand side also 11.3 है. संजीति बोलिए. Right hand side भी क्या है? 11.3 है कि नहीं? That means masses are conserved. So in the above equation, 5.3 plus 6 grams is equal to 11.3 of the reactants, and 2.2 plus 0.9 plus 8.2 is 11.3. So this, what is say, illustrates the law of conservation of mass. Manasvi, Padi, second question. Hydrogen and oxygen would combine in the ratio 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen? ये तो simple question है. अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम से combine करे ऑक्सीजन से, तो 3 grams of hydrogen will combine with how much? 3 times ना उसका. So what is that? 24 grams, isn't it? चलो next one, पढ़िए अदिति. Which postulate of that? एक मिनट ये पहले क्वेश्चन, इसके पहले आपको पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन. पेज नंबर 61 देखिए और उसमें चाहिए postulates of, right? Yes, sir. You are not feeling well, then you can go home. No. Huh? I You want one? didn't attend both the lectures. नहीं, but you want to have crocin, you can have it. हाँ, ये crocin ले लो, अच्छा लगेगा. I am on stomach infection medication, so I cannot have crocin. Okay. State the पढ़िए. State the postulates of Dalton's atomic theory. Yes. According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. The postulates of this theory may be stated as follows. All matter is made up of very tiny particles called atoms. Yes. Atoms are invisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Good. Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. Yes. Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. Good. The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. अभी अदिति पढ़िए second question. Indivisible cannot be divided. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? उसमें से देखिए कौन सा conservation of mass indicate कर रहे हैं. The second postulate. Yes, that atoms are indivisible, right? Na? Cannot be created or destroyed. Second postulate. चलो, प्रीतिका पढ़िए. Question number 3. No, question number 4. Sorry. Which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportions? Yes. The sixth postulate, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. एक मिनट, ये question number 3 और 4 को आप mark कीजिए and लिखो उधर, ठीक है? Refer page number 61 for postulates. Please refer page number 61 also for this question. You will not come to know. Huh? Sanjay पढ़िए. Next one. Define the atomic mass unit. Yes. One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon. Yes, it is 1/12 mass of one atom of carbon. Chalo, next one. Why is it not Business possible पढ़िए. to see an atom with nucleus? Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. Atoms are so
insignificant in size. Our entire world is made up of atoms. We may not be able to see them, but they are there and are constantly affecting. There was a film called Honey, I Shrunk the Kids. मालूम है आपको? Yes. ये आप पिक्चर देखिए, then you will come to know. No, I saw this movie with हाँ? Even I saw it. I saw this movie with my dad. हाँ, तो dad must have told you. ये इसमें ना microscopic world में इन atoms and molecules का अगर आपको Similarly, एक movie, I watched it when I was very young. हाँ, right, microscopic world में अगर जाना है आपको उसको imagine करना है, then you can see this film because you like it with atoms and molecules. So next, कौन पढ़ रहा है? जितने अक्षर पढ़िए, फिर से बोनस आंसर मिल क्वेश्चन मिल रहा है. Write down the chemical formula. Of the following, yes, sodium oxide का क्या formula है? Crisscross, Na2O, right ना? ये तो practice कर लिया था हम लोगों ने. फिर भी पढ़िए. Aluminum chloride, what is that? AlCN3. Very good. Then sodium sulfide, daddy का T है वहाँ. Yes. Na2S. Why? Because एक ही element है sulfur. Then magnesium hydroxide. बोलिए. MH. हाँ? MH. MH नहीं, Mg है ना? Sorry, MgOH. The whole bracket OH, the whole twice. चलो next one. अनुराग पढ़िए. Write down the names of compounds represented by the following formula. Al2SO4 3, हाँ. BCSCl2, C. नहीं, my friend, आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना और उसका corresponding answer Al2SO4 3, which is aluminum sulfate. Very good, हाँ. BCSCl2, which is calcium chloride. C K2SO, which is potassium sulfate. D KNO3, which is potassium nitrate. And ECaCO3, which is calcium carbonate. Good. Next one. What is meant by the term chemical formula? The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. The chemical formula of different compounds can be written easily if we learn the symbols and combining capacity of the elements. Yes. चलो पढ़िए. Edlin, बोलिए. How many atoms are present in a H2S molecule and PO3 minus 0.4 ion? नहीं, PO4 minus 3 ion. अपन नहीं बोलना है. Okay. PO4 minus 3 ion. चलो next पढ़िए. In a H2S molecule, there are 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur. And 1 atom of sulfur. चलो then and missing of that. चलो then PO4 3 minus. वहाँ typing mistake है. PO4 3 minus 3 minus ion. There is 1 atom of phosphorus and 4 atoms of oxygen. Very good. Then Aditi पढ़िए 11th question. Calculate the molecular masses of H2. ये तो सिंपल है. H2 का क्या हो जाएगा? 1 plus 1 2. ऑक्सीजन का क्या है? 16 plus 16 which is 32. क्लोरीन का कितना है? 35.5 into 2. अभी इधर प्लस किया है. आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. Right? 2 into 35.5 71. What about carbon dioxide? C plus 2 into O कितना हो जाएगा? 12 plus 16 to the 32. 32 plus 12 44. आइए ना सबको? 12th question पढ़िए मनस्वी. Calculate the formula unit masses of ZNO, Na2O, K2CO3. Given atomic masses of Zn is equal to 65U, Na is equal to 23U, K is equal to 39U, C is equal to 12U, and O is equal to 16U. Yes. Answer ZNO is एक मिनट तुम लोगों को मैं एक काम I will give you some writing work. Question number 12. Okay, question number 12, all of you. 13, 14, ठीक है? 15, 16, ठीक है? और 22, sorry 21 भी नहीं 20, 21, 22 बस इतना आपको अभी करना है.
and submit on a piece of paper, give it to me, let me check. And then we'll discuss out next time this remaining questions. चलो start करो. Page कौन सा question है मालूम है आपको? Adeline, which question you mark? 12, 13, 14, 15, 16 and 17. And 20, 21, 22. So 12 है. हाँ? 12 है. 12 yes. 12 कौन सा है? Yes. 12 अभी जो पढ़ा है उन्होंने. चलो सब लोग क्या करेंगे? एक पेपर पे अपना नाम लिखेंगे. मिडिल पेज tear out करेंगे. हाँ मिडिल पेज यूज कर लिया आपने. पार्टनर से लो मिडिल पेज. ठीक है? किसी के पास मिडिल पेजेस नहीं है. संजीती आपके पास मिडिल पेज है? कुछ भी नहीं है. एक पेज में आ जाएगा. हाँ एडलिन इज हैविंग. तो एक पेज उनको टेयर आउट करके दे दीजिए. हाँ उनको भी दे दीजिए. अच्छा नहीं है? हाँ चलो बस बस. क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है. क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन का आंसर लिखना है. क्वेश्चन सिर्फ आपको नंबर लिखना है. ठीक है चलो स्टार्ट कीजिए. तो ये श्योर क्वेश्चन है एग्जाम में आपको. क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं लिखना. राइट ऑन पेज नंबर, चैप्टर का नाम, योर नेम, ओके, दिस ब्रांच सानपड़ा और आज का डेट और क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर. ठीक है. 10-15 मिनट है. इमीडिएटली कंप्लीट. 10 ही मिनट है. Within 10 minutes try to cover up. Next time you'll have a test on this part. Okay, close textbook. तो आपको होमवर्क भी दे रहे हैं. Right from 23rd question. Okay, till the last सब लोग को कैलकुलेट करके लेके आना. ये होमवर्क करके लाना. ये राइटिंग वर्क. ऋतिका लिख के रख दीजिए. कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23rd onwards to 35. राइटिंग वर्क. हाँ? क्वेश्चन नंबर 23 to 35. 23 to 35. तो होमवर्क है. एटलीन आप लिख रहे हैं कि कुछ ये आर्टिस्ट होमवर्क है 23. you're drawing something तो आराम से बनाइए. nothing to. सर हाँ 23 to 35 होमवर्क है. yes पूरा लिख के लाना है. सर हमारे स्लाइड है. Mind चलो कुछ. हमारे स्लाइड है. Headache. Yeah, So you want medicine? I'm not sure.
want to relax. You want to rest. Take rest. Nothing to do. 16th. ये भी घर में जाके कर लेना. ठीक है? और जितना हो सके अभी कर लोगे तो क्या होगा? और हेडेक हो जाएगा. When you pile up your work. Isn't it? पानी पियो. Have you got water bottle? वॉशरूम जाना है तो जाके आओ. ठीक है? जाओ थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा. You take some fresh air. Go out. Go to the washroom. Splash करो water. If you want some medicine, then you can take it. So rest ले लो चाहिए. You put your head down, relax. You do at home, nothing to do. The health is more important. Ritika, if you want to put your head down, relax. ठीक है? Go out and the washroom में जाके fresh हो जाए. Does this work if I give it as homework? Give it as homework. Thank you. कितना मार्क्स का हो गया? वेरी गुड. चलो रेस्ट ले लो थोड़ा. 4 मिनट है. Edlin, how many questions are over? To the 16th question. Okay. जितना शाह आपका क्या है? Same. Same. 16 question. मोबाइल सब अंदर रखिए बैग No, में. sir. मोबाइल है कि नहीं आपका? Nine. नहीं है. श्योर Well, नहीं लगे मोबाइल. गुड. आदित्य कितना क्वेश्चन हो गया आपका? 17. गुड. 17 नहीं लिखना है. 20. तुम 17 पे जा रहे हो. Did you get your unit test marks? अभी तक एग्जाम हुआ कि नहीं? फ्राइडे हो गया आपका. कितना मिला? आउट ऑफ 25. out of 40. अच्छा कम हो गया आपका. ओके. So where you lost? Physics and biology. Oh, Chemistry में अच्छा मिला. केमिस्ट्री में मिल गया आपका. और जितना से आपका कितना? 20. आउट ऑफ 40. तो कहाँ कम हो गया? सब में. फिजिक्स में कम हो गया. स्टार्ट वर्किंग ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में कर लो. फिजिक्स थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है. सॉरी सेक्शन. मोशन 1. Pain in the pants. अच्छा पेन. Why you don't like that? No. Motion is that Newton's law, na? No, that is different. Motion is Okay. You had something. खाना वाना खाया कि नहीं घर में?
You had your food, na? Then came for the class, na? Without food, you have come. Huh? You had, na? हाँ. अभी ठीक लग रहा है थोड़ा रेस्ट ले लो 5 मिनट का ब्रेक है ना put your leg down relax this you show me next time हो गया मानस भी आपका हो गया okay so all of you do one thing ये next time you show along with your homework which I have given you इसको बुक में रख दो okay and next time you show me so thank you very much next time we look at topic खत्म करते हैं and then we'll discuss some questions again of this topic next time and test will be there for this topic so prepare करके आए so we may start with the new topic also last 15 minutes में ना नया topic start करेंगे what is that structure of atom ना कोई topic बचेगा उसको भी start कर देते हैं so that you can get some rest ठीक है thank you मुझे क्या पता मैं जैसे हर कोई पूछने का ना तो सबको पता है कि मैं बोल रही हूँ People from this. मेरा सर फट मैं कुछ नहीं कह रही हूँ शांति से लेक्चर I got drenched in the rain afterwards. इसके बारे में